Hello everybody. So today we are going to do a very important chapter of class ninth biology, which is cell. It's the chapter 5 of your NCRT textbook, which is the most important book you need to do and do it very thoroughly in your life, where in whichever class you are. So when we talk about cell, in class 8 we have already learned about amoeba, which is a unicellular structure, which means it's a single cell structure. It performs all activities in its own. It has a nucleus. It looks weird all the time. It looks really weird all the time to everybody. It has a cytoplasm. It forms pseudopodia. We have learned a lot about amoeba in your earlier classes. But now as we grow old, we are in class ninth. So we're going to study and learn more about what are cells. So in class your 10th 11th 12th, cell is the thing that will come always. If you are going to opt for your biology in your class 11th and 12th, again cell will come. So cell is a very important chapter you have to do, and you have to be very clear with your basics around. So when we talk about cell, what we learn is it's the basic structure and functional unit of life. So I was teaching this to the earlier batch, that it is a structure which does all cores of your body. So then we talked about Robert Hooke, who discovered cells, and he discovered cells in dead bark of wood. It's the bark of the tree, जिसमें हमारे रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. He discovered dead hexagonal cells which had a lot of depositions inside it, because of which he thought that it is dead. It lacked cytoplasm. No cytoplasm was found in the cork cells. Then we came to know about the cell theory, again a very important thing, which was given by three scientists, Schwann, Schwann, and Virchow. Schwann, that one cell is the smallest unit in your body, is the smallest structure. There's no structure smaller to a cell in your body. Then one was, it is the basic structure and function unit of your body, which is very important. Then the most important was what Virchow said. Virchow said that new cells arise from the pre-existing cells. So this must be clear to all of you. And this is a very important statement. I have marked a star here, that omnis cellula is cellular. This is a very important statement that you will come to know, which means that new cells arise from the pre-existing cells in your body. Now, what we were talking about, unicellular and multicellular organisms. So we have talked about the division of labor, the cell differentiation in unicellular and multicellular organisms. Cell differentiation, what is cell differentiation is? सिंपली आप अगर हिंदी से आप लोग कंफर्टेबल हैं, सेल डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर. इन इंग्लिश यू विल से दैट इट इज डिवीजन ऑफ लेबर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इट सिंपली मीन्स दैट अपने काम को बांटना. आई एम सॉरी इफ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर नॉट अंडरस्टूड बाय यू. तो काम को बांटना ही सेल डिफरेंशिएशन कहता है. तो हमारे सेल डिफरेंशिएशन में क्या कहते हैं कि कई सारे सेल्स हैं, तो डाइजेशन कोई करेगा, रेस्पिरेशन कोई करेगा, एक्सक्रीशन कोई और सेल करेगा. तो इससे हमको ये बात क्लियर रहती है लाइफ में बहुत ज़्यादा. अब हम एक बहुत, मैं ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जा रही हूँ अभी. शेप और फंक्शन अक्वायर्ड हम लास्ट में करेंगे. आपकी एनसीईआरटी में वो पहले दिया हुआ है, बट शेप, सेल्स की शेप और उनके फंक्शन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, जब आप असली में जान जाओ कि स्ट्रक्चर सेल का होता कैसा है. स्ट्रक्चर ऑफ सेल की हम बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है. अब हमारे पास पहली चीज आ जाती है, हम पहले एक सेल बना लेते हैं. चलिए हम एक सेल बना लेते हैं.
मैं एक सेल बना रही हूँ. I hope my drawing is good enough for you all to understand. ये एक सेल, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, एक सेल कैसा दिख सकता है. अभी आप लेके चलिए. दिस इज अ प्लांट सेल दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ राइट नाउ. We have two types of cell, animal cell and plant cells. This is the plant cell that we are going to draw right now. I am going to use different colors to certainly mark different things in a I also increase the font. It's better visible to all of us. Alright, so when we talk about this is a cell wall. This is what? It is a cell wall. This is cell membrane. पहले हम सिर्फ ओवरव्यू में देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमारे सेल के अंदर हो सकते हैं और उनका नाम क्या है. फिर उनके फंक्शन पे हम बाद में जाएंगे. ठीक है. तो अभी हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक नाम आता है ऑर्गेनेल्स जिसमें हम कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ सेल्स हैं हमारे. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं. पर अभी हम ऑर्गेनेल्स पे नहीं जाएंगे. अभी हम सिंपली बात करेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. तो सेल वॉल जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर है. इट इज अ रियल हार्ड स्ट्रक्चर in which it is only present in plants, bacteria, fungi. That's it. It is not present in animals, humans, or any other animal. Cell wall is absent, completely absent. So, cell wall is absent in us. So, first feature that we get to know about cell wall is it is dead. It is a dead structure. Let me change the font color and be, it should be about this, right? It's dead. Then it is rigid. It is dead. 1, 2, it is rigid. 3, gives shape to cell. It gives shape to cell. फिर एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है फुल्ली परमीएबल. फुल्ली परमीएबिलिटी का क्या मतलब है? ये हम इसको और थोड़ा सकते हैं. allows all substances to move across it. So it is fully permeable and allows all substances to move across it. This is a very important point about your permeability of the cell wall. And ये अभी हमने ये क्या था, इसके फीचर्स हो गए. Okay, let me tell you that this is also a feature of your cell wall only. And then when we talk about the functions of the cell wall, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और क्योंकि रिजिड है तो विथस्टैंड करता है ये वाटर का प्रेशर, और टर्जिडिटी मेंटेन करता है, और शेप, और ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स शेप, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड थिंग्स. बट दिस इज the only important things that we should know.
बाकी आप यू विल रीड योर एनसीईआरटी टू मेक इट मोर क्लियर। नाउ जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेल. It is living in nature. It is made up of phospholipid bilayer. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारी एनसीईआरटी में। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये हमारे बॉडी की एक लेयर है ये प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं और ये हमारे लिपिड्स हैं। लिपिड्स की क्या है? बाइलेयर बन रही है, दो हैं क्योंकि 1 2 तो बाइलेयर बाइलेयर है। तो बाइलेयर से इसका काम क्या है हमारे को जानना है कि इसका काम क्या है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से हमारी सेल मेम्ब्रेन मतलब आप समझ लो ये पूरी हमारी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में प्रोटीन्स हैं और दो ऐसे लिपिड्स की वो है। तो अब जब हम बात करते हैं हम ये जो लेयर है इसमें हमारे पास दो एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को हमारी। तो हमारे पास इसमें जो दो एंड्स आ रहे हैं एक है हेड और एक है टेल।